Hello everyone and welcome back to SSBCrack Exams. I am Mrs. Lakshmi, your maths mentor, back with the segment of lecture based on the topic Simple and Compound Interest, जिसके हम important questions discuss करने वाले in the series Top 200 Most Expected Questions your upcoming AFCAT 2020 exam point of view. But solutions को जानने से पहले फिर से एक बार रिकॉल करना चाहूंगी, वी एट SSBCrack Exams committed to provide you the best content to crack your all the defense examination. आपके AFCAT कोर्स के लिए भी हमारे पास डिटेल एक्सप्लेनेशन बेस सब्जेक्ट वाइज कंटेंट लेक्चर्स एंड बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट है जो आप गो थ्रू करके अटेम्प्ट करके बेस्ट प्रैक्टिस से और करेक्ट एक्यूरेसी से आपका AFCAT एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. तो हमारा कोर्स आपको अगर बाय करना है प्लीज यूज द कोड warrior10. इससे आपको फ्लैट 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल द कोर्सेज यू वांट टू बाय. You can follow us on YouTube, on Instagram, and you can visit our webpage learn.ssbcrackexams.com. सभी कोर्सेज की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी. कंटेंट लेक्चर्स, मॉक टेस्ट सीरीज जो है आपको अभी जो टाइम चल रहा है आपके AFCAT एग्जाम से पहले जो बेस्ट है आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपके एक्यूरेसी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए. सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट सीरीज एंड all the best in your preparation for upcoming AFCAT 2020 exam. You can download our app in Google Play Store with name SSBCrack Exams. You can enroll for free. There are few free content lectures, few study material which are free for you to access. You can go visit our web page or you can also watch them in our mobile with your login details you enroll for. So do watch all the free lectures and buy the course and get the best output in your AFCAT 2020 examination. So let us now look into the another question in line on simple and compound interest. The simple interest on sum of money is 1/9 of the principal. Simple interest जो बताया है वो है 1/9 of प्रिंसिपल अमाउंट. सो प्रिंसिपल अगर P होगा देन सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा 1/9 ऑफ P. एंड द नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम पीरियड जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो है इक्वल टू रेट % पर एनम. सो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द नोन कंडीशंस दैट सिंपल इंटरेस्ट SI इज गिवन टू बी 1/9 into principal and the rate of interest and the time period which we denote by R and T respectively are equal to each other, right? And here we need to calculate the rate of interest per annum, which you can calculate with the help of the formula of simple interest. You know I is equals to PRT upon 100 and इसको आप modify करोगे as you want R value, right? So R is equals to हो जाएगा I into 100 upon PT. Now let's substitute in these values. So in this R is as it is. The simple interest I is given to be 1/9 times of P into 100 upon P into again R because R and T are same. So here as you could see the principal getting cancelled, right? And we are getting R square is equals to 100 upon 9, which would give by taking positive square root. Negative square root we cannot take here, it's amount, it cannot be negative. So it's 10/3 and इसका division देगा आपको mixed fraction 3/1/3%. And hence for this question option B is the right choice. Now let's look into the next question. The sum of money lent out at simple interest amounts to rupees 720 after 2 years. Understand this line, a sum of money lent out at a simple interest. So that sum of money is unknown here, let us say P, right? It has been lent out at simple interest. It's amounting to rupees 720. ये जो 720 है वो जो फाइनल अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा है, right? जो है
A is equals to P plus I होता है. Principal is unknown, but certain interest would be added to the principal to get this final amounted in the account. So that is for 2 years known to you. And also mention that rupees 1020 ये हो जाएगा after a further period of 5 years. So here you know the amount which is getting deposited, getting accumulated at the end of 2 years and at the end of 5 years. और दोनों सिनेरियो के लिए in this question you are unknown with principal amount, right? और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे सिर्फ टाइम पीरियड आपको बताया गया है along with the amount. तो टाइम पीरियड you know there are 2 years and 5 years mentioned, but the unknown another parameter here is the rate of interest जिसको हमें फाइंड आउट करना है. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, एक सिंपल अप्रोच बताती हूँ. पहले आपको यहाँ पे अगर कैलकुलेशन हो जाएगा 5 years का सिंपल इंटरेस्ट का, that how you can calculate, that you can easily calculate by taking the difference, because आपको ये बात पता होनी चाहिए अमाउंट जो होता है, the amount which get accumulated in the account based on the principal amount you deposited and the interest added to it. This is the formula for I, right? तो यहाँ पे हमें I का जो फॉर्मूला मिलता है वो है A माइनस प्रिंसिपल करके, और ये दोनों सिनेरियो में अमाउंट दिया गया है जो कि है 720 और 1020. इसमें से जो है बिगर अमाउंट है 1020, राइट? सो वी विल ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस, बिगर माइनस स्मॉलर अमाउंट. But here you note that this P is getting cancelled for both of them, right? तो 5 years तक का कैलकुलेशन जो हम करेंगे SI का, SI for 5 years, जो कि सिंपली आ जाएगा आपको सब्ट्रैक्ट करने से 1020 माइनस 720 जो मिलेगा ₹300. Why this direct shortcut? Because here you observe that this principal P is getting subtracted. Here actually you have the I minus I difference, which is simply the amount difference only, A minus A, because this P gonna cancel in both the case. So hence इनका जो difference है 5 years तक का हम calculate कर ले रहे हैं दोनों का amount लेके 1020 and 720 जो कि है ₹300. Now we also know in the question SI for 2 years, right? So let us write SI for 2 years, जो कि ये जो 300 अमाउंट है SI till 5 years, इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो रहेगा वो 2 years का कहलाएगा, वो 2 out of 5 years का है. ये यहाँ पे एक फ्रैक्शन कंसेप्ट मैंने यूज किया है, ये सिंपल है, अंडरस्टैंड कीजिए. 5 years तक का आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, राइट? और आपको अभी सेकेंड ईयर तक का उसका अमाउंट जानना है, तो 2/5 part of it, right, of this 300 rupees you gonna get this as ₹120. So very important step, please note this, you can use in your shortest way of calculation. Now अभी जो प्रिंसिपल है 2 साल का वो आसान हो गया कैलकुलेट करना, क्योंकि हमें SI मिल गया ₹120 है और अमाउंट पता था 720, तो ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे A इक्वल टू P प्लस I, जो कि हमें प्रिंसिपल देगा 2 years के लिए, राइट? सो प्रिंसिपल जो मिलेगा हमें वो है ₹720 जो बताया था अमाउंट है 2 साल के लिए, माइनस उसका जो हमें इंटरेस्ट मिला है 120, सब्ट्रैक्ट करने से यू गेट प्रिंसिपल एंड दैट इज हियर ₹600, राइट? अभी ये प्रिंसिपल 600 लेके हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि हमें पता है कि ये जो प्रिंसिपल कैलकुलेट हुआ है 2 years के लिए है, तो टाइम पीरियड हमें यहाँ पे पता है 2 years है. सो इन आवर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला ऑल द थिंग्स आर नोन एक्सेप्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला जल्दी से रिकॉल करते, ये है R इज इक्वल्स टू I इंटू 100 अपॉन PT. सो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, I जो कि हमें पता था कैलकुलेशन से 120 रुपीज इंटू 100 अपॉन जो प्रिंसिपल मिला वो है ₹600 इंटू टाइम पीरियड 2. तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल रहा है, वो मिलेगा 10%, राइट? सो देन वी कैलकुलेटेड फॉर दिस क्वेश्चन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 10%, and we also know here that this ₹600 which we obtained to be the principal amount, राइट? सो सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लिए, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट चॉइस है.
सो एक बार रिवाइज करती हूँ, मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंड कीजिए। 5 इयर्स तक का जो अमाउंट दिया था और 2 इयर्स तक का जो अमाउंट दिया था उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, यू विल गेट द एसआई फॉर 5 इयर्स 300। और वो 5 इयर्स के एसआई से 2 इयर्स का एसआई निकालना आसान होता है, ये फ्रैक्शन का कंसेप्ट इस्तेमाल करके, 2/5 ऑफ 300। तो इससे आपको क्या पता चला, प्रिंसिपल सेकेंड ईयर तक का, क्योंकि अमाउंट पता था, तो अमाउंट माइनस आप अगर एसआई करते हो प्रिंसिपल मिल गया 600 रुपीज, तो ये 600 रुपीज प्रिंसिपल कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 120 कहलाएगा, और टाइम पीरियड 2 लेके आप इजीली रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच करने से आपको जल्द से जल्द आंसर मिल जाएगा, और हमें जैसे मिला ऑप्शन डी। नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन रिटायरमेंट ए पर्सन गेट्स 1.53 lakhs of his provident fund. One person getting 1.53 lakhs of his provident fund which is he invested in a scheme of 20% per annum. तो यहाँ पे जो 20% per annum है, ऑब्वियसली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बताया, राइट? और वो जो पर्सन है उसका जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो उसे मिल रहा है, वो है 1.53 lakhs में एक्सप्रेस किया है, तो आप इसको मल्टीपल्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, शॉर्टर यूनिट्स में। पता ये करना है कि व्हाट वाज हिज मंथली इनकम फ्रॉम दिस स्कीम, मंथली इनकम फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ईयरली इनकम मिल जाती है, जस्ट डिवाइड इट बाय 12, यू गोना गेट द मंथली इनकम फॉर दिस। यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करनी होगी कि ये जो मंथली इनकम ये मैन का रहेगा, वो रहेगा उसका इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा है मंथली, राइट? उसके जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट था 1.53 lakhs। तो यहाँ पे एक्चुअली मंथली इनकम फाइंड करना जो होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन रहेगा, बट मंथ के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड हियर दैट दिस मंथली इनकम विच वी आर कैलकुलेटिंग फॉर दिस पर्सन would be what? His interest he is earning month wise. But we have the simple interest formula I to be applicable for the unit time period is year. So first of all, what we would do is we calculate this simple interest for an year. So time period हम hence लेंगे 1 year का, जबकि principal हमें लेना है 1.53 into 10⁵ में, because of the 1.53 lakhs simple unit में express कर रहे, upon फिर जो R रहेगा rate of interest वो है 20%. So in this formula now we're gonna get I is equals to 1.53 into 10⁵ into rate of interest 20 into the time period 1 upon 100, और ये आंसर आपको देगा 1.53 into 10⁵ into 20 upon 100 equals to rupees 30,600. ये है फॉर एन ईयर, राइट? बट हमें पता करनी है मंथली इनकम, राइट? तो मंथली इनकम इसी में से हम डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा मंथली इनकम इज इक्वल्स टू this 30,600 rupees which that person get, right, in a year from his provident fund. In month he would get 30,600 divided by 12, which would be around the amount 2,550 rupees. So hence इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. Now let's look into the next question. A person invested in all rupees 2,600 at 4%, 6% and 8% per annum. One person has invested in all rupees 2,600. In all, there may be 3 different ways he invested the amount, but invested with the different rates too. 4%, 6% and 8% per annum. And the rate of interest of calculation is simple way, so it's simple interest. At the end of the year, he got the same interest in all the 3 cases. At the end of the year, so 1 year के end में इन्होंने जो इन्वेस्ट किया था अमाउंट 4%, 6%, 8%, तीनों पे सेम इंटरेस्ट जो है लागू है. So the money he invested at 4% हमें कैलकुलेट करना है.
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो हम इसको लिखते हैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 सेम है, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दे आर डिफरेंट. बट ऑल्सो the rupees 2600 divided into 3 different forms of money, right? वो हमें अननोन है, तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो 2600 रुपीज है, सपोज x में, y में, और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो रहेगा 2600 माइनस x प्लस वाई. अग्री? तो ये तीनों अमाउंट में बांटा गया और इन्वेस्ट किया गया है 4%, 6% एंड 8% से. तो अकॉर्डिंगली वी विल गेट I1 फॉर्मूला, जिसका प्रिंसिपल हम ले रहे x, राइट. देन द टाइम पीरियड जो दिया गया है हमें कंसिडर करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंसिडर करना है, तो वो है 4%, टाइम पीरियड 1 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल y, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टाइम पीरियड 1 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल अमाउंट 2600 माइनस x प्लस y, राइट, into the rate of interest 8% for 1 year upon 100. तो ये हमें इक्वालिटी कंसिडर करनी होगी as per the question. Now in this, if you simplify this proportionality, you're gonna get the simplest ratio. Y by x is equals to 4 by 6 is equals to 2 by 3. राइट, जो जिसको हम लिख सकते हैं y is equals to 2 by 3 times of x के फॉर्म में. सो y का जो वैल्यू है आपको मिला x के टर्म्स में. नाउ यू कैन यूज दिस वैल्यू टू सब्स्टिट्यूट इन दी थर्ड, राइट, wherein you have taken the principal amount 2600 minus x plus y के फॉर्म में. So next line will solve this sum. So next line पे हम कंसिडर करेंगे ये फर्स्ट I1 और इसको हम इक्वेट करेंगे थर्ड के साथ, because we know now the relation of y and x values, right? So here I have written for you this equation. Now in this, if you do the simplification, you're gonna get the new equation 4x is equals to 7800 minus 5x times 8 upon 3, जो further simplify करने से आपको मिलेगा 52x is equals to 7800 into 8, which would result x is equals to 7800 into 8 upon 52 to give you the value of x as rupees 1200, right? So x हमें पता चला जो कि प्रिंसिपल था, डिपॉजिट हुआ था 4% इंटरेस्ट के हिसाब से, एंड एज पर द क्वेश्चन दैट वाज अ रिक्वायरमेंट, राइट, कैलकुलेट द मनी इन्वेस्टेड एट 4%. हमने 4% मनी इन्वेस्टेड क्या लिया था, x, तो x का आंसर हमें मिला रुपीज 1200 एंड हेंस द आंसर डी फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A lent rupees 5000 to person B for just 2 years and rupees 3000 to the person C for 4 years on simple interest at the same rate of interest. So same rate of interest से person A ने B को lend किया अमाउंट और person A ने ही person C को lend किया है certain amount, but the time period जो है वो different है यहाँ पे, 2 years for the person B and 4 years for the person C, and important here is that the simple interest is considered. Now the person A is receiving rupees 2200 in all from both of them as interest. Obviously when he had lent the amount he must get returns. He is getting returns rupees 2200 in all from both of them. So पता करना है rate of interest per annum, R. R is unknown in this question, so R is unknown. What we know, the sum of money he is receiving, right? That is actually the amount, the interest amount he is receiving from both of them. So here we know that this I, which is the resultant, I would say here, right? Resultant amount, it is given to be rupees 2200, जिसको हम इक्वेट करेंगे सम ऑफ टू सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज को. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ मैं आपके लिए, I इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 होता है, राइट?
Now this formula we use for two scenarios, I1 and I2. I1 when A is lending money for the person B, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो है 5,000 रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन है और टाइम पीरियड 2 years है अपॉन 100. दिस गो प्लस विथ because he is getting that combined amount, right, 2,200. So it would go plus with the principal, that is for I2. principal consider करना होगा हमें 3,000 rupees, right, और rate of interest unknown है but time period दिया गया था 4 years upon 100. तो ये equation को आप simplify कर लोगे, then right hand side you would get the simplest equation in terms of R, that is 100R plus 120R, जो कि होगा राइट हैंड साइड में 220R, right, and this gives the answer for R as 2200 divided by 220. It's clear to see that it's 22 tens are, right? So R is equals to 10%, and hence for this question answer is option D. So I hope you understood very well the solutions of questions so discussed, which are expected in your upcoming AFCAT examination based on simple and compound interest topic. Please follow us on YouTube, Instagram page, and do not forget to visit our webpage learn.ssbcrackexams.com to know all the insights of all the defense courses we have launched for defense aspirants like you to crack your written examination for sure. So stay tuned to SSB Crack Exams for all the in detail information coming in line to you.